Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about World Book Fair Vishwa Pustak Mela. So this chapter I chose from the grade 3 textbook Gunjan and the chapter number is 14. So as I already said, the name is Vishwa. Vishwa means world, WORLD. Pustak means book, Mela. Mela means fair, FAIR, fair. Okay, so in this we are going to learn about this World Book Fair which is held in Pragati Maidan, Delhi, and Delhi is the capital of India. Okay, now let's start. बातों बातों में in general, आपने कौन कौन से मेले देखे हैं? Which fairs have you seen? कौन कौन से means which, और what kind of fairs have you seen? मेले में क्या क्या होता है? What the things are there or what happens in the fairs? हमारे देश में, हमारे मीन्स ROUR, देश में मीन्स in the country, मेलों का fairs प्रचलन रहा है. The meaning of प्रचलन is, you can say it's tradition or you can say sometimes fashion. Okay, so हमारे देश में मेलों का प्रचलन रहा है means the fairs have always been in the tradition in our country. मेले अनेक प्रकार के होते हैं. अनेक means many or various. प्रकार means types, kinds. So there are various kinds of fairs. इनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं means the fairs fulfill our needs. ज़रूरतें means needs, NEEDS, needs. पूरी होती है means fulfill. साथ ही means along with. मनोरंजन होता है means we get entertained also through the fairs. So इनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं means we fulfill our needs through the fairs and we get entertained also through the fairs. मनोरंजन means entertainment. इस पत्र में इन दिस लेटर दिल्ली इज डेली, DELHI, दिस इज कॉल्ड इन हिंदी दिल्ली, विश्व पुस्तक मेले के विषय में बताया गया है, हैज बीन डिस्क्राइब्ड अबाउट द वर्ल्ड बुक फेयर. ओके, सो दिस इज अ लेटर written by Ankit. Okay, so Ankit wrote a letter to his friend Prakhar. The name of his friend is Prakhar and he is describing the World Book Fair with the help of or in this letter. So now let's start. They have given the address 14/2 Dilshad Garden, Delhi 110095, 11 January. 11 means 11 and 20XX. Priya Prakhar. Priya means dear. Okay, Prakhar is the name of the boy. कैसे हो? How are you? इन दिनों means these days, प्रगति मैदान में, in the प्रगति मैदान is a very famous place in Delhi. विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है. इन दिनों these days in प्रगति मैदान the World Book Fair is held. So मैं परसों, मैं means I, परसों means the day after tomorrow is called परसों and the day before yesterday is also called परसों. But how we differentiate? We differentiate with the last word of the sentence. So मैं परसों अपने दादाजी के साथ मेले में गया था. See, you can notice here it is written गया था. So गया था थी थे always we use in the past tense. So we can relate that परसों word with गया था means they are telling about day before yesterday. Okay, so they are telling about day before yesterday. मैं परसों I day before yesterday अपने दादाजी के साथ with my grandfather. दादाजी means father's is known as दादाजी, mother's father is known as नानाजी. Okay, so with my grandfather मेले में गया था, went to the fair. Okay, so I went to the fair with my grandfather day before yesterday. इसमें in this देश विदेश के, देश means country, विदेश means
फॉरेन कंट्रीज के प्रकाशकों की पुस्तकें होती हैं. प्रकाशकों मीन्स, प्रकाशक मीन्स पब्लिशर, एंड प्रकाशकों दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रकाशक, पब्लिशर्स की पुस्तकें होती हैं. मीन्स इन दिस फेयर देयर आर द बुक्स ऑफ publishers from all around the world. Here the meaning is this. Okay, next paragraph. हम लोग means we. लोग basically more than one person. Means Ankit is saying me and Dadaji. मेट्रो से, मेट्रो is the metro train. प्रगति मैदान पहुँचे. We reached प्रगति मैदान by metro. वहाँ मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी थी. लंबी मीन्स लॉन्ग, कतार मीन्स क्यू, लाइन. ओके, जाने वालों की, जाने वालों मीन्स गोअर, और द पीपल हु आर गोइंग टू द प्रगति मैदान. सो देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू हु वर गोइंग टू द सेम फेयर. हम टिकट खरीद कर अंदर पहुँचे. वी रीच्ड इनसाइड आफ्टर टेकिंग और बाइंग टिकट. ओके, खरीद कर, खरीदना मीन्स टू बाय और टू परचेज. कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी वहाँ आए थे. कुछ मीन्स अ फ्यू, स्कूल्स विद्यार्थी, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट और स्टूडेंट्स भी वहाँ आए थे. मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ फ्यू स्कूल्स वर ऑल्सो देयर और केम. वहाँ बड़े बड़े हॉल थे. मीन्स देयर वर बिग बिग हॉल्स जिनमें स्टॉलों पर पुस्तकें सजी हुई थी. मीन्स वेयर द बुक्स वर अलाइंड और सजी हुई. द मीनिंग ऑफ सजी हुई बेसिकली एग्जैक्ट मीनिंग इज डेकोरेटेड. ओके, टू डेकोरेट समथिंग और टू गेट डेकोरेटेड समथिंग, that is called sajna, sajana. So here they are telling ki like there were big big halls and there were so many stalls, and on every or each stall, each and every stall, there were so many books. इतनी पुस्तकें देखकर means when I saw these so many books, मेरी तो आंखें फटी रह गई. आंखें फटी रहना, this is a proverb, so which is generally used for to get shocked, to get surprised. Okay, so when I saw so many books, then I got surprised. वहाँ मीन्स देयर, THERE, देयर. इतिहास, इतिहास मीन्स हिस्ट्री. भूगोल, भूगोल मीन्स जियोग्राफी. ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान मीन्स साइंस. ज्ञान इज बेसिकली नॉलेज, विज्ञान इज साइंस. साहित्य, साहित्य मीन्स लिटरेचर. यात्रा, यात्रा मीन्स ट्रैवल. धर्म, धर्म मीन्स रिलीजन. आदि विषयों की पुस्तकें थी. एटसेट्रा सब्जेक्ट्स बुक्स वर देयर. सो देयर वर सो मैनी बुक्स. ओके, अमंग ऑफ दैम बुक्स दीज काइंड ऑफ बुक्स वर देयर लाइक लिटरेचर, टूरिज्म, रिलीजन, नॉलेज, एटसेट्रा. हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश. ओके, सो इंग्लिश इज कॉल्ड इन हिंदी अंग्रेजी. के अलावा, के अलावा मीन्स अपार्ट फ्रॉम. सो अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, अन्य भाषाओं की पुस्तकें. अन्य मीन्स अदर, भाषाओं मीन्स लैंग्वेजेस की पुस्तकें मीन्स द बुक्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस. पत्र पत्रिकाएं भी थीं. पत्र मीन्स लेटर्स, but here the meaning is not that letters that we get from our relatives or friends. So here they are using the patra patrika, means magazines. Okay, so there apart from the Hindi and English, other languages books and magazines were also there. इस मेले में, in this fair, पुस्तकों के अलावा apart from the books, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी. पढ़ाई लिखाई means education or study से जुड़ी. जुड़ी means related. Exact meaning is जुड़ी is to get attached. Okay, to connect. Here you can say the sense is related. Okay, so सभी सामग्रियाँ, सामग्रियाँ is called material. You can say kind of material. Okay, भी मिलती हैं. Means in this fair apart from the books you can get the material related with the education or studies. तरह तरह के खिलौने. तरह तरह मीन्स वेरियस, डिफरेंट.
Khilone means toys, so means multiple kinds of toys. Puzzle. Vigyan means science. Ganit means mathematics. जैसे विषयों से, जैसे means like, विषय is called subject. जुड़े खिलौने खूब बिकते हैं. जुड़े means again related, खिलौने खूब बिकते हैं. खूब means in a sufficient quantity. So खूब means like more and more here, but the sense is like in an enough quantity you can get the different kind of toys, puzzle, and the toys related with the science and mathematics also, like they sell. Okay, so what Ankit is saying, in this fair, apart from the books, we can get the material which is associated with the studies. In fact, we can get the multiple kinds of toys, puzzles, and the toys related with science and mathematics also. These people, they sell. बिकते हैं means being sold. नेक्स्ट पैराग्राफ. दादाजी ने मेरी बड़ी बहन के लिए, मीन्स ग्रैंडफादर, मेरी बड़ी बहन के लिए, फॉर माई एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन मीन्स एल्डर सिस्टर, पंचतंत्र और अन्य कहानियों की पुस्तकें खरीदी. मीन्स द ग्रैंडफादर परचेज्ड द पंचतंत्र एंड other stories books for my elder sister. Kharidi is the past tense, means bought or purchased. Okay. Panchtantra is a very famous, it is very famous for the stories, and in fact these stories are very interesting for kids. मैंने अपने लिए means I, for myself, अपने लिए means myself, for myself, हिंदी का सचित्र शब्दकोश. सचित्र means with picture, स means with, चित्र means picture, so with picture. शब्दकोश means dictionary. Origami, कविताओं means poems. कहानियों means stories. और सामान्य ज्ञान की, सामान्य means general, ज्ञान means knowledge, means general knowledge की कुछ means few पुस्तकें खरीदी हैं. means I bought for myself the dictionary with picture, like Hindi dictionary with picture, origami, and few books of poems, stories, and general knowledge. कविताओं की एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी. मीन्स वन बुक ऑफ पोएम्स आई लाइक्ड वेरी मच. बहुत अच्छी लगी मीन्स लाइक्ड वेरी मच. उसकी कुछ कविताएं मीन्स अ फ्यू पोएम्स ऑफ दैट बुक तो मुझे याद भी हो गई हैं. मीन्स अ फ्यू पोएम्स ऑफ दैट बुक आई हैव मेमोराइज्ड ऑल्सो. Memorized or recited, like when you are memorizing something. Okay, so means I liked one book of poems very much, and a few poems from that book I have even memorized also. दादाजी ने मुझे पजल दिलाए means like दादाजी purchased puzzle for Ankit. क्योंकि means because. इनसे हमारा means through this. ROUR, मानसिक means mentally, विकास means development or you can say growth होता है. means दादाजी took puzzle for me. Why? Because it developed our mentally growth. Okay. मैंने तुम्हारे लिए भी, I, तुम्हारे लिए means for you, भी means also, कुछ ऐसे ही, some like this, खिलौने और पुस्तकें खरीदी हैं. Toys and books purchased. So I have purchased for you also the same toys and books. Ankit is writing in this letter, okay, to his friend ki I have purchased the same toys and books for you also. Next paragraph. पुस्तक विक्रेताओं means seller, SELLER. seller means who sells something, okay, like shopkeepers.
सो बुक सेलर्स ने खरीदारों को, खरीदारों मीन्स बायर्स, कस्टमर्स, लुभाने के लिए, लुभाना मीन्स टू अट्रैक्ट, ओके, के लिए, फॉर, ओके, सो टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स कुछ योजनाएं बना रखी थी, मीन्स दे मेड some offers, you can say kind of yojana. Basically the meaning of yojana is called plan, 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 okay. So but here the sense of yojana is offer, you can say kind of offer. So to attract the customers, the booksellers, they set some offers, like जैसे like पुस्तकों के साथ with the books, नए वर्ष का कैलेंडर, नया मीन्स न्यू, वर्ष मीन्स ईयर, YEAR. सो द कैलेंडर ऑफ द न्यू ईयर विद द बुक्स, डायरी, पेन, पहले 10 खरीदारों को 100 रुपये, मीन्स पहले मीन्स फर्स्ट, 10 खरीदार मीन्स 10 कस्टमर्स को 100 रुपये मूल्य की, मीन्स द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़, पुस्तकें मुफ्त देना, पुस्तकें मीन्स बुक्स, means the books worth ₹100 to give free to first 10 customers. So like this the booksellers, they set some offers, okay. So why? Because they wanted to attract the customers. So what are those offers? Those offers are to give the new year calendar, diary, pen with the books, or the first 10 customers will get the free books of 100 rupees cost. मुझे भी उपहार में कुछ चीज़ें मिली, I also got, मिली means got, कुछ means few, चीज़ें means things, THINGS things, उपहार, उपहार means as a gift, okay. So I also got a few things as a gift. Next, मेले में हमने खाना भी खाया, we had food also in the fair. खाना बहुत स्वादिष्ट था, स्वादिष्ट means tasty, खाना means food, okay. So meal or food was very tasty. मैंने आइसक्रीम भी खाई, भी means also, so I ate ice cream also. Next, पुस्तक मेले में, in book fair, पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर, means when I saw the unique world of books, मुझे अच्छा लगा, I liked means I liked the unique world of the books in the book fair. अगले वर्ष, अगला means next, next year, तुम भी, you also, यह मेला देखने, to see or to visit this fair, ज़रूर आना means do come, okay. Do come means you also, certainly you also come to visit this fair next year. चाचा जी और चाची जी को, चाचा जी means father's younger brother, चाची means चाचा जी's wife is called चाची जी, okay. So here again this is, you can say kind of change the gender, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी. तो चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से, मेरी ओर से means on behalf of me or from my side, प्रणाम कहना, प्रणाम means नमस्कार, just say namaste or convey my regards, we can say like that. So convey my regards to uncle and auntie on behalf of me. तुम्हारा मित्र, तुम्हारा means your, मित्र means friend, Ankit, okay. So I hope you understood. This letter is written by Ankit to Prakhar. This letter is about the World Book Fair which is held in Pragati Maidan, and the Pragati Maidan is in the Delhi. So let's have a look on the word meanings. Page number 102. Pustak, pustak means book. Qatar, qatar means queue, line. Vidyarthi, vidyarthi means student. Vikreta, vikreta means seller, SELLER. Upahar, upahar means gift. Mansik, mansik means related or associated with mind, okay, mentally. Sachitra, sachitra means with picture. Puzzle, puzzle is paheli, okay. So let me say thank you, see you soon, till then thank you, bye bye.